Last class we had discussed regarding vectors. Triangle law of addition discuss ହେଇଥିଲା. So ତା ଦେହରୁ highlights କ'ଣ ଆମେ draw କରୁଛେ ସେଥିରୁ important points ହେଉଛି vector addition is commutative and associative. A plus B vector ଯାହା B plus A vector ସେଇଆ. And ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଭେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରୁଛେ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ନଥାଏ upon the resultant. A plus B plus C vector ର resultant ଯାହା A plus B vector ର resultant plus C vector ର resultant ସେଇଆ. That is, the order of adding the vectors does not matter. Second, ଦୁଇଟା vector ର resultant maximum କେତେବେଳେ? When the angle is 0 degrees in between them. Two vectors, vector A and vector B. ଏମାନଙ୍କର resultant maximum ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ directionରେ head କରୁଥିବେ. And the resultant is minimum when both of the vectors are facing opposite to each other. Right? So in this case, the theta is 0 degrees, and in this case, theta is 180 degrees. Now, ତୁମମାନଙ୍କର task ହେଉଛି to prove mathematically that two vectors with 0 degrees angle between them give the result A vector plus B vector. You can do so with any example. And also to prove that two vectors which have an angle of 180 degrees in between them, or two antiparallel vectors, give the resultant A vector minus B vector. Again, A case रे भी तुम्हें माने किसी भी example नहीं परिवो. So do it yourself in your copy. Third is दुईटा vector ଯେତେବେଳେ ଥିବେ A and B, जदि A and B are not equal, A और B जदि दुईटा equal vector नथिवे, ताहले resultant केबे भी 0 हबा possible नुह. If two vectors A and B are unequal, then their resultant cannot be 0. ऐसे देख लो, maximum resultant केते दीटा vector रा जेतेबेले से दीटा vector add हेबे, and सबुठु कम minimum resultant सेतेबेले जेतेबेले vector माने opposite direction रे थिबे से टाइम रे they will be subtracted. Point 2 रे that has been mentioned. एटा तुमको proof करिवार अछि as your assignment, but so straight line रे तो दीटा vector जदि equal थिबे ताहले 0 हबार नाही, but opposite line रे भी when they are opposite in direction से समय रे भी सेतेबेले ही 0 होई परिबो जेतेबेले A और B होची equal magnitude रा. But unless A and B are equal, resultant cannot be 0. Here we are talking about the magnitude. Even though you say that ठीक अच्छे सर आमे अलगा डायरेक्शन करके 0 करिवु, बट जेतेबेले दुईटा वेक्टर विषय आमे कथा होचे से समय रे से दुईटा जाक वेक्टर डायरेक्शन जदि ऑपोजिट भी अछि तापरे भी दुईटा जाकर मैग्नीट्यूड सेम थिले ही रिजल्टेंट 0 होई परिवो. ठीक अच्छे. And point 4 is resultant of vectors of equal magnitude is along bisector, else R makes smaller angle to the larger vector. तामाने कोन जेतेबेले दुईटा वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड रा थांती से एटा ए वेक्टर एटा B vector, both of them are say 20 newtons. A vector भी 20 newton,
B vector be 20 Newton. ता भितर angle 60 degrees. Now if you find the resultant is along the bisector. Bisector मतलब ये जो angle 60 degrees अच्छी 60 degrees रो bisected angle is यानी कि गोटे angle होची 90 degrees ताको तुम्हें bisect करूचो माने you are dividing it into two equal halves. This is 45 45. Similarly, if you are bisecting 60 degrees, as in this case, the angle will be 30 degrees. ठीक है? And second part is two vectors, say 20 Newton and 40 Newtons. आर जितेबाला resultant बाहर से दुईटा जाक भितर एंगल होची 60 degrees. This resultant will not make 30 degrees angle. A resultant जो angle होबो it will be making a smaller angle to the larger vector. एठी larger vector होची 40 newtons. So ये जो resultant होबो in terms of angle A resultant रा angle 40 newtons को close रहिबो. Let us check in a bigger diagram. Let this be 20 Newton. Let this be 40 Newton. This angle is, say, theta equals to 60 degree. जदि 40 न्यूटन जगार आम 20 न्यूटन लिखि था ताहले resultant would have been 30 degrees. से केस एग्जांपल केमती नबा 20 न्यूटन आउ गोटे 20 न्यूटन. That means a resultant is along the bisector. Assume 20 Newton. This is 30 Newton. Resultant angle टा जो alpha रहिबो ए जगह alpha को resultant रा angle मानि नबा with vector B 30 Newton vector. Alpha is less than theta by 2. Similarly, जितेबाला वेक्टर बी आउ टिके लार्ज हो जाउची से 40 न्यूटन ये जो एंगल फॉर्म होबो बीटा विल बी स्मॉलर देन अल्फा. ठीक है. नाउ कैन यू ट्राई प्रूविंग दिस. Take out your notebook and try solving these very exact sums. ठीक है. And say sum solve कला बेले keep in mind angle formed by resultant or tangent of angle formed by resultant is
b sin theta by a plus b cos theta. Use this formula. ए फॉर्मूला को यूज करो एंड ए तीनटा केस रे केस 1 केस 2 केस 3 try to find out the value of alpha. Normally ये पता चलेगा that alpha for case 1 is greater than alpha for case 2, that is again greater than alpha for case 3. ट्राए करो एटा प्रूफ करबाकू जदि हेलानी then I'll do it in the next class. But keep in mind जेते जेते गोटे वेक्टर बढ़ी बढ़ी जाए रिजल्टेंट सेते सेते से वेक्टर आड़ को ट्यून ही जाए और रादर से वेक्टर सहित रिजल्टेंट एंगल सेते कमी कमी जाए. नाउ गोटे क्वेश्चन देखिबा. There are two vectors a and b of equal magnitudes 10 Newton. Find the angle between them such that resultant r is 0 Newton, b 20 Newton, c 10 Newtons. Now केस ए पाई 0 न्यूटन ता माने ए जगह कौन गिवन अच्छे ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर equals to 10 newtons. Now you can use the formula that a square plus b square plus 2ab cos theta equals to 0. That means a square plus b square equals to minus 2ab cos theta. That means (200) equals to minus 200 cos theta. Cos theta equals to minus 1 or theta equals to 180 degrees. That means whenever two vectors 10 Newton and another 10 Newton are anti-parallel to each other or ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 180 degrees रे थांती so तांका resultant 0 आसे. Similarly 20 Newton ପାଇଁ କ'ଣ ହବ summation of root over of a square plus b square plus 2ab cos theta equals to 20 or 100 plus 100 plus 200 cos theta equals to 400. ए केस रे आमे LHS
एंड RHS दीटा को स्क्वायर कर देले फर्स्ट स्टेप रु सेकंड स्टेप को आसला बेले दैट मीन्स 200 cos theta equals to 200 or cos theta equals to 200 by 200 equals to 1 or theta equals to 0 degrees. Theta equals to 0 degrees माने A vector parallel to B vector से दुईटा जांको गोटी डायरेक्शन रे अछंती. Condition C is 10 newtons. दुईटा मु कर देली. थर्ड वन मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ. दिस इज योर असाइनमेंट. What is the angle between two vectors A and B of equal magnitude 10 newtons such that resultant R is 10 newtons? ठीक अच्छे. दीटा वेक्टर अछंती. A vector is 10 newtons, B vector is 10 newtons. ता भितरे थीटा एंगल कौन हेले रिजल्टेंट विल बी 10 न्यूटन्स. ये पता करो. ठीक. सो दिस इज लाइक third part of your assignment. This was the first part. This was the second part. And this is the third part. Now, मन पकाओ आमे गोटे क्वेश्चन देखिथिले रिगार्डिंग ए हेक्सागन. गोटे रेगुलर हेक्सागन थिला and it was a question of vectors. Question number 13, H.C. Verma, part 1. So there is a small video on it, वो भी चेक कर सकते हो आप. So for any regular polygon जोटा कि मेंशन करा है एज एज्यूम करो ये फिगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है. से केस रे जदि हम वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन रे प्रति वेक्टर रो टेल सहित आ गोटे वेक्टर रो हेड कनेक्ट होइचे और यानी कि गोटे लास्ट वेक्टर रो हेड फर्स्ट वेक्टर रो टेल सहित कनेक्ट होइचे. एज्यूम करो ए इज द फर्स्ट वेक्टर. तार टेल एटा लास्ट वेक्टर होची ई रो हेड एटा. सो इट हैज बीन connected or it is at the same point. That means the sum of all the vectors एथरे गोटे दीटा तीनटा चारटा पाँचटा छटा सातटा आठटा वेक्टर भी हो पारे. ठीक. 1 2 3 4 5 6 7 8. But if the initial point and the final point as the same, जो जगार गोटे वेक्टर स्टार्ट होइछि सेही जगार जदि गोटे वेक्टर एंड होउछि, the resultant is a null vector. It's a vector of zero magnitude, no magnitude, no direction. Check कर दो से question. I'll pin the link, right? So simply putting, जितेबाला n coplanar vectors अछंती and they have equal magnitude and the angle between them is equal. Hence, starting ray I had mentioned that it should be a regular polygon. Regular polygon माने say hexagon or pentagon. जो केस रे angle between any two sides or angle between any two adjacent sides
इज इक्वल. ठीक है. So whenever we have n coplanar vectors of equal magnitude and having equal angles of separation, their resultant is 0. Alright. Let us try another question. Two forces numerically equal to 10 dynes are acting as shown in the figure. Then find the resultant of these two vectors. Now theta vector mention करायची. Let it be vector A and let this be vector B. Now let us solve. Resultant is square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Theta is 60 degrees. So resultant is a square plus b square plus 2ab cos 60. And ये हो गया सत्यानाश. Theta is not 60 degrees here. A जगह रे theta is not 60 degrees. Now some of you be like, काहीतरी मला माहित नाही. We know sir, theta is not 60 degrees. अब थीटा क्या है फिर? जिन लोग को नहीं पता होगा थीटा 60 डिग्रीज नहीं तो फिर क्या है? जदि थीटा 60 नुह ताहले कौन? So let us see what is to be done. Let us draw it like this. This is vector B. Extend vector A so that their tail points coincide, right? So अब मिलेगा आप लोग को थीटा. This angle, that is 180 degrees minus 60 degrees equals to 120 degrees, right? So theta is actually 120 degrees. अब हटाओ 60 को. भूल जाते हैं कि 60 था कुछ. मतलब ये भूलना है कि थीटा 60 था करके. पूरा भूल मत जाना. प्रॉब्लम प्रॉब्लम भूल के चला मूवी लगाने लग गए. वो नहीं करना है. सो 2ab cos 120 डिग्रीज. अब बाकी यू पीपल आर स्मार्ट. तुम समस्त आंसर जाना ही अच्छे. 100 प्लस 100 कहना दीटा जाको 10 डाइन्स ईच. 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 120. ठीक. उसको सॉल्व किया तो 200 प्लस 200 इंटू minus 1 by 2, that is 200 minus 100 or 100 root over, that is 10 dynes. ठीक. सो आई होप एटा समस्ते बुझी पार्थिव. ठीक अच्छे. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. Magnitude of sum of two unit vectors is root 2. Find the magnitude of subtraction of these unit vectors. Now ए क्वेश्चन भी मु तुम मान ऊपर छाड़ुच. ठीक है. अभी तक कितने असाइनमेंट हो गए? ये था तीसरा असाइनमेंट.
This is the fourth assignment. Bring it to the class if you can. We'll check. Else, we will discuss this in the next session. ठीक है? So, thank you and adios. Stay tuned.